Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? These words, penned by the famous poet William Blake, aptly bring forth the grandeur, magnificence, and awe associated with the tiger. Our history and religion bear witness to how this great animal, created by an immortal hand, was raised to a cult status by the earthly mortals in numerous statues, frescoes, paintings, and postal stamps. No one, however, knew that the very mortal vices of pride, ego, and greed shall one day lead to an almost wipeout of this cult animal. The Indian subcontinent, that boasted of more than 40,000 tigers at the turn of the 19th century, had just 1,800 tigers left when the first All India Tiger Census was conducted. Thus far, the situation has only worsened, with the country now having only 1,411 tigers left in the wild. This hapless scenario has been the direct result of indiscriminate poaching and habitat destruction due to felling of trees, large-scale development projects, and mining. Even in this grave scenario, the sprawling forests of Satpura are a silver lining. These virgin forests are rich in biodiversity and stand out as an ideal tiger habitat. Spread over unending tracts of green, covering 1,427 square kilometers and lapping innumerable hills and hillocks of sandstone, deep ravines and gorges, the Satpura forests are a visual delight. Consisting of the Satpura National Park, the Bori Sanctuary, and the Pachmari Biosphere Reserve, the Satpura forests offer the most unique ecosystem in the entire central Indian highlands. सतपुड़ा इकोसिस्टम बहुत यूनिक इकोसिस्टम है। कई बार इसे कहा जाता है कि ये हिमालय का सर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, क्योंकि वो सारी स्पीशीज़ जो हिमालय में मिलती हैं उनमें से बहुत सारी स्पीशीज़ यहाँ भी मिलती हैं, और वो बहुत सारी स्पीशीज़ जो साउथ इंडिया में मिलती हैं, दक्कन प्लेटो में मिलती हैं, वो वेस्टर्न घाट में मिलती है, वो यहाँ भी मिलती हैं। तो ये दक्कन प्लेटो का या वेस्टर्न घाट का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। इसी तरह से एक प्लांट स्पीशीज़ है ड्रोसेरा। ड्रोसेरा इज़ इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कि कीड़े खाता है, और ये उन जगहों पे रहता है जहाँ पे नमी बहुत हो, मॉइस्ट जगह हो, और इसका भी बड़ा स्पेसिफिक सा हैबिटेट है। लेकिन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में आपको ड्रोसेरा मिल सकता है जो सेंट्रल इंडियन प्लेटो में और कहीं भी नहीं मिल सकता है। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का जो लैंडस्केप है, इसमें सैंडस्टोन बहुत ज़्यादा है। जो सैंडस्टोन होता है ये रेन वाटर को एब्जॉर्व कर लेता है और धीरे धीरे पानी को परकोलेट करता है। तो यदि आप सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि हर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे कोई एक नेचुरल स्प्रिंग है या सीपेज है। तो जानवर को जो पानी पीने की जगह है वो बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और यही इस पार्क की यूनिकनेस है कि यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल बनी हुई वाटर बॉडीज़ बहुत कम मिलेंगी, उसके प्रपोर्शन में नेचुरल वाटर बॉडीज़ बहुत ज़्यादा है। The park has a variety of floral and faunal species. The floral species include sal, teak, tendu, aula, mahua, bale, bamboo, and various types of medicinal plants and grasses. सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में के क्षेत्र में बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट हैं जो हिमालय में मिलती हैं, और उन मेडिसिनल प्लांट को कंजर्व करने के लिए
मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया MPCA करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट था FRLTH के कोलैबोरेशन में। उस प्रोजेक्ट के तहत हमने एक देयर इज़ अ प्लेस कॉल पनार पानी में हमने एक नर्सरी बनाई है जहाँ पे हमने उन सारे मेडिसिनल प्लांट्स के डेमो प्लॉट्स रखे हैं। टूरिस्ट भी उन्हें जाके देख सकते हैं और उनके बारे में अवेयर हो सकते हैं। The fauna consists of the big cats, tiger and leopard, deer species like sambar, cheetal, barking deer and mouse deer, antelopes like nilgai, blackbuck, chausingha and chinkara, gaur, sloth bear, wild boar, Indian wild dog, and the pride of Satpura, the Indian giant squirrel. जॉइंट स्क्वायरल भी वेस्टर्न घाट का स्पीशीज़ है, बट वेस्टर्न घाट के बियॉन्ड केवल मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के केवल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में मिलता है। इट्स अ सिंबल ऑफ कंजर्वेशन। तो यदि आपको जॉइंट स्क्वायरल को बचाना है तो आपको उन पेड़ों की कैनोपी को बचाना होगा जिनमें वो रहता है, और जब आप उन पेड़ों को बचाते हैं तो आप पक्षियों को बचाते हैं जो वो घर बनाती हैं वहाँ पे। जब आप पेड़ों को बचाते हैं तो लंगूर को बचाते हैं जो उन पेड़ों की पत्तियों को और फल को खाता है। आप लंगूर को बचाते हैं तो आप चीतल को भी हेल्प करते हैं सस्टेनेंस में। चीतल को आप हेल्प करते हैं तो टाइगर भी वहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह से एक अच्छे इकोसिस्टम का सिंबल है जायंट स्क्वायरल का प्रेजेंस। A wide variety of birds like peacock, hornbill, dove, hoop, neelkant, kingfisher, etc. also inhabit these forests. This healthy biodiversity symbolizes the well-being of these forests and makes Satpura forest an ideal habitat for the tiger. टाइगर्स की जो संख्या है मोस्टली ये बोरी साइड में है, और जो लोग वहाँ विज़िट करने जाते हैं पार्क में वो जाते हैं मड़ी साइड से। अभी इसलिए हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था और शुरू की है जिसका उद्घाटन हम करने वाले हैं 8-10 दिन 15 दिन में, जिसमें हमने इसको चूरना के साथ कनेक्ट किया है। तो चूरना में वहाँ टाइगर देखने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। However, the story doesn't end here. There are serious challenges. Although the government and the forest department have done their bit to relocate many villages located inside the park, there are still dozens of them well within the core area of the park. Today, while we were entering the Satpura National Park, there were a number of barriers. It was very good to find them. But unfortunately, even after crossing the fourth barrier, there we could spot a number of cattle, cows and buffaloes, as well as some huts and villages inside very well within the limits of the park. How do you harmonize the living of the villagers along with the wildlife? How it can be managed finally? I mean, management is difficult. Harmonizing is, utopian goal. The only problem this tiger reserve is having, in 1500 square kilometer area, there are more than 35 villages are there. Though we successfully relocated 4-5 of them, Bori is one, Dhai is one, Sakot is one. Recently, just a month back, we have relocated a Khakrapura village. So we are trying to relocate them. In Bori Century, we have some 17 plus villages are there. And the total area of Bori Century is roughly 500 square kilometer. So this becomes roughly 30 square kilometer a village. So for every 30 square kilometer of patch, there is a village, and all those reflection you can very well see in the forest area. So as you go deep inside where there is no villages, you'll find the forest quality is much better. The ever-increasing pressure of the villagers for fuel wood, cattle grazing, and such other needs takes its toll on the forest cover. If you'll ask a tiger, they'll say that we people are straying in their area. A law academy or any other new construction used to be a very good forest. Even, I don't know, many people know or not aware about this, that the last tiger in Bombay was shot in 1929. Can you imagine? In 1929, there were tiger inside the city of Bombay. The last reported thing is from Bombay is of 1929. Today, can you think of any tiger inside Bombay city? You can't think of. So we are invading into their areas, and whenever they are raising their voice against that, we are saying they are straying in our area. Chances of cattle being preyed upon by a tiger are always there, and hence man-tiger conflict having dangerous ramifications cannot be ruled out.
जानवर के किलिंग का होता है, जो गाय भैंस वगैरह हैं, इस तरह के प्रकरण आते हैं तो तत्काल हम मुआवजा उनको दे देते हैं। क्योंकि तत्काल मुआवजा मिल जाता है इसलिए उनका कोई आक्रोश नहीं होता। नहीं तो पहले पॉइजन डालते थे तो कुछ घटनाएं उसके कारण भी हुई थी, लेकिन आजकल वो घटनाएं नहीं हो रही। लोगों का ग्रीवेंस है तो लोग रिटेलिएट करते हैं, हम उसको खत्म तो नहीं कर सकते हैं। we just can't ask them कि आप you sell out your agriculture land and you move out from there. That's not possible in present scenario. So what best we can do, we can give them compensation of whatever loss being done or whatever harm been done by the animal. So there is a provision that if any injury got happened by attacking some animal to some human being, so there is a provision of compensation. Even if some herbivores, if they are doing the crop rates, there is a provision of compensation. Do you think is there a need for increasing the number of tiger corridors in the state of Madhya Pradesh? Yes, we badly need corridors, because as I was talking, our tiger reserves, they are the gene banks, and for the dispersal of the tiger population we need corridor, because we know in long term the inbreeding would going to harm the population of the tiger reserves, and we could nullify the impact of inbreeding only by the dispersal of gene pools. So we need a forest corridor for those tigers and other animals from Satpura to Pench, from Pench to Kanha, from Kanha to Bandhavgarh, and from Bandhavgarh to Panna, so that all these 5 prime tiger habitats of central India could get the gene dispersal from each other. कॉरिडोर की स्थिति तो संतोषजनक नहीं कह सकते। बहुत से रिसोर्ट बन गए, हालांकि रिसोर्ट की अनुमति कोई वन विभाग नहीं देता। ये आदिवासियों की ज़मीन पर रेवेन्यू से परमिशन लेकर बना दी उन्होंने, तो उससे जो कॉरिडोर कनेक्टिविटी है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आई है। तो इसलिए जितनी अच्छी स्थिति होना चाहिए कॉरिडोर्स की उतनी तो नहीं है। तो कॉरिडोर्स की स्थिति अच्छी करने के लिए आपको क्या लगता है कि कौन से सरकारी विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, या सरकार और कुछ क्या कर सकती है, वन विभाग और कुछ क्या कर सकता है, या दूसरे डिपार्टमेंट से कह सकता है? देखिए, जो बन चुके हैं रिसोर्ट्स उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य में ना बने इस बात की चिंता कर रहे हैं। The prerequisite for tiger conservation is maintaining a healthy tiger habitat. And this requires a multi-pronged strategy. I would never use this कि okay number बढ़ रहा है और घट रहा है. You yourself can see the habitat is in good condition. That is the beauty of this place. And as in terms of number, as I said, it's 40 plus by the WI census. Again, with the help of WWF, we are again deploying the camera traps. We have just started with doing the camera traps in this tiger reserve, and maybe in couple of months we'll come with a new figure. Participation of people, especially those who stay on the periphery of the tiger reserves and national parks, is a must for this noble cause. To ensure their participation and cooperation, they should be able to relate to and identify with the importance of tigers and their habitat for the very survival of humankind. Fortunately, the government, the forest department, and the wildlife NGOs have begun to realize this. And a lot of activities are being organized to create awareness among the masses, especially the youngsters and the children. हम आपके शहरों में नहीं घुस रहे हैं, बल्कि आप लोग हमारे जंगलों में घुस आए हो। ये धरती पर यदि जीवन को बने रहना है, आदमी को बने रहना है, तो हमें अपना पर्यावरण, अपने जंगल, अपने जल स्रोत, अपने वन्य प्राणी, इन सबको सुरक्षित करना होगा। बाघों को, वनों को, शेरों को बचाने की दिशा में आप सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। Some corporate groups under the corporate social responsibility are doing commendable work in the form of media campaigns and animation films. The Indian tiger, it seems, can now look ahead with confidence and trust towards a future, a
hard-earned future that all of us will have to continuously keep striving for.